everyone, welcome back. Today we are going to start with a new concept and that concept is acceleration. And dear student, velocity of all the bodies does not remain same. Okay, means velocity can be changed. And how velocity can be changed? Velocity can be changed by three different ways. The first way is by changing the speed of the object, keeping the direction same. The second one is by keeping the direction same and changing the speed. And the third one is by changing speed as well as direction. So in this way, velocity of the object can be changed. Now let me tell you one simple example. Suppose a car is being driven on a straight road for testing its engine. मीन्स क्या है, हमें ये चेक करना है कि क्या कार का इंजन, क्या इंजन की एवरेज क्या है, क्या एवरेज स्पीड है. सो द बॉय हु वाज सिटिंग इन द कार, ही विल test the engine. So how will he test the engine? The boy who is sitting next to the driver, he will observe the, or you may say he will note down the reading on the speedometer. Now I am using here the term speedometer. So what is speedometer? Speedometer is an instrument which is used to measure the speed. Now how that boy who was sitting next to the driver, how he will observe the speed? He will observe the speed by observing the speedometer at different intervals of time. So now how he will observe? He has written time on one side and the speed on the other side. And he was observing the time in the second and the speed in the meter per second. So what he has observed? He has observed that at 0 second, the speed of the car was also 0 meter per second. And during one more second, or you may say at the time of 1 second, the speed of the car changes to 10 meter per second. In the next second, the speed of the car changes to 20 meter per second. In the third second, the speed of the car changes to 40 meter per second. In the next 4 seconds, the speed of the car again changes to 20 meter per second. Now what the boy has observed? The boy has observed that the speed or the velocity, if we will consider the direction along with the speed, then we can say that it is velocity. So what the boy is observing now? The boy will observe that the velocity at different interval. Here, if the time was 1 second, the velocity was 10 meter per second. If time was 2 seconds, the velocity was 20 meter per second. If time was 4 seconds, velocity was 20 meter per second. The boy has observed that velocity either increases with the time or either decreases with the time. Or increase or decrease means what? Increase or decrease means change. So this change of velocity and the change of velocity and how the velocity is changing, velocity gets changed with the passage of time. And this is called our concept, which is acceleration. So acceleration is what? Acceleration is defined as the rate of change of velocity with the, or you may say with respect to time. Okay, velocity का change होना with the passage of time. Okay, and acceleration को हम represent किससे करते हैं? Small a से. तो acceleration का क्या symbol है? Small a is the symbol of
एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा? चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के साथ। डेल्टा वर्ड इज यूज्ड, और यू में से डेल्टा वर्ड रिप्रेजेंट हियर चेंज, और चेंज किसमें होता है? वेलोसिटी में, और वेलोसिटी में चेंज किसके साथ होगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और हाउ कैन आई राइट? मे आई राइट इट एज, देखो जो फाइनल स्पीड होती है, एक होता है हमने कहा कि ऑब्जेक्ट कहां से वो कार स्टार्ट हुई, और एक थी उसकी जो फाइनल स्पीड की वो एंड पॉइंट कहां तक गई। तो जो स्टार्टिंग स्पीड होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, और जो फाइनल स्पीड होती है उसको हम किससे लिखते हैं? v से। तो ऑलवेज चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, और ये फाइनल और इनिशियल चेंज किसमें हो रहा है? वेलोसिटी में। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, और नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होगा? तो हमने स्टडी किया था वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का अगेन क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ सेकेंड की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, और ये -1 होगा, पावर साइन चेंज हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैं इसको और कैसे राइट कर सकती हूँ? इन दिस वे, इट्स अप टू यू। तो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Is that clear? Next, come to the next topic, and your topic is positive and negative acceleration. Okay dear, what do you mean by positive acceleration? And the second one is the negative acceleration. So dear student, again come to the first example, positive acceleration. Positive means हमने क्या कहा? You was here, the boy was observing that if time was 0, the velocity was 0. If time was 1, the velocity was 10. If time was 2, velocity was 20. Means velocity क्या हो रही है? टाइम के साथ increase. और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती है देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन. तो इंक्रीज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ओके, नाउ कम टू द नेगेटिव एक्सेलरेशन. हमने कहा कि पॉजिटिव में वेलोसिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीज. तो नेगेटिव में क्या होगा? वेलोसिटी में डिक्रीज. तो हाउ यू विल डिफाइन इट? डिक्रीज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम. ओके, डिक्रीज इन वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी का कम होना, डिक्रीज होना, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम सिंपली एक्सेलरेशन ही कहते हैं, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन का अदर नेम है. वन इज रिटार्डेशन, यू मे से इट एज द रिटार्डेशन, और इफ इट इज रिटन एज डिसेलरेशन देन बोथ हैव द सेम मीनिंग एंड द मीनिंग इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. इज इट ओके?
now come to our next point, and the point is uniform acceleration and non-uniform acceleration. Uniform acceleration and non-uniform acceleration. अब यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? इक्वल. एंड एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो हमें दोनों को कंबाइन करना है. कैसे करोगे? हमने कहा यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल और एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम. मीन्स क्या होगा? इफ velocity changes equally, how you will define it? If velocity changes equally with the equal intervals of time. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्टेन हाइट से फॉल करता है ग्राउंड पे, तो इसमें क्या होगा? इसकी वेलोसिटी इक्वल चेंज होगी और टाइम भी क्या होगा? इक्वल. तो फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट, और सेकंड यू में कंसीडर इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन के केस में ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से सपोज कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये भी क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी भी इक्वली चेंज होगी विद द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ कम्स टू आवर नेक्स्ट द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगेन नॉन मीन्स नॉट, uniform means equal, and acceleration means velocity per unit time. तो क्या मीनिंग हुआ? If the velocity is not, or you may say if the velocity not changes equally with the equal intervals of time. So how you will define it? If velocity changes unequally with the equal intervals of time, then it is the case of non-uniform acceleration. For example, आपने देखे क्राउडेड सिटी में जो व्हीकल्स मूव करती हैं, तो देयर वेलोसिटी चेंजेस unequally. Time equal होता है but their velocity changes unequally. So how you may take the example? Vehicles moving in crowded city. Okay, so this was all about the non-uniform acceleration. So again recap, today we have discussed that what is acceleration. After then we have studied the SI unit of acceleration, and after then we have studied the positive and negative acceleration, and finally we have studied that what is the difference between uniform and non-uniform acceleration. Okay, so hope you all will understand, and with this, thanks to all.